Hello friends, I welcome all of you to this question answer session on the secret of healthy heart. We know the heart is very important organ of our body, and as in India we rank first in the world in terms of heart diseases. So I believe awareness is the best cure and the medicine for any kind of diseases. And to spread the awareness, I requested one of my best friend, Dr. Nawazid. He is very senior cardiologist in one of the very famous hospital at Delhi, and he is going to conduct a session on how to keep our heart healthy. And I request all the participants, you ask the maximum number of the questions that you can ask regarding your heart. So now I hand over to the Dr. Nawazid for the further part. Good evening, sir. Good evening. Thank you for taking out time and enlightening us. My question is, लोग वो जो बोलते हैं ना कि इसके 4 ब्लॉकेजेस थे, 6 ब्लॉकेजेस थे, वो निकाल लिए अगर वो होता, मतलब क्या वो एक ही लोकेशन पे वो ब्लॉकेज होता है कि ऐसा पूरा पाइपलाइन में होता है, उसके वो ट्रिम होता है? See, if it is available, seen, our heart is like this, right? So the heart supplies blood to all over the body, but the heart also needs its own supply. The blue ones are the veins, the red ones are the arteries, right? Yes, yes. So the venous system is relatively low pressure system, and hence the propensity to cause disease there is less. But the arterial system is subjected to the main pressures in the main circulatory system, and hence this is in continuity with the arterial system of the body, and hence it has got propensities of disease. Now, the arterial system is a long one. You can see multiple points. Inside of the vessels, the lumen may get affected by certain things called atheroma. Atheroma means you can have some areas which gets inflamed and it gets attracts clot and thus cause heart disease. So it can affect one segment of the artery, it can affect the entire artery, and it can affect multiple arteries at the same time. To ask one question, that this disease is purely related to lifestyle, or it is hereditary also? Okay. See, the hereditary part is there. All diseases may be linked with hereditary, directly or indirectly. But hereditary part is only about 30 to 35%. The contribution of lifestyle appears to be more. Okay. Out of this lifestyle, in India, the most important factor are hypertension and diabetes. That is why I highlighted this. Okay. But by changing the lifestyle, the disease can be avoided. See, already when you have the disease, you cannot avoid the disease because you already have it. You can reduce the intensity of the disease. Okay. So changing lifestyle means adopting a lifestyle early on in life. And the lifestyle starts changing right from the childhood. You know, the interesting concept is, in Spain, they have started this concept कि heart disease को prevent करने के लिए स्कूल में और जो मदर्स है, माताएं हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाए. Concept is the mother controls the house, and अगर मदर ने बचपन से आपको हेल्दी हैबिट डाल दिया तो आपकी चांसेस ऑफ or the probability of prevention is much more. It can be done in simple ways, like avoidance of smoking, behavioral pattern, and decreased carbohydrate intake in the food, increased
physical exercise, all these things, if started early on in life, it is beneficial. By the age of 50, आपने irregular life lead किया up to age of 50. By 50 already disease process has started. 50 साल 55 साल में अगर आप prevention का system ले रहे हो, then you cannot prevent it. Get my point? Okay. But ये अक्सर देखा गया है कि जे people who are taking alcohols, their hearts are not giving away very easily, I think. हाँ, alcohol लेकिन ना interesting feature है. Now, you know, Shakespeare famously said, it increases the desire, but decreases the performance. We have to remember that. Okay. Now, alcohol in many trials and studies, especially the nurses' health study and the doctor study done in England, it is a 10 years old study. They showed that low to moderate grade alcohol is actually protective to the heart. Okay. But having said that, those studies did not include the Indian population. Now, a large study was conducted called the Interheart study, where India was a major part. Delhi was an important area in the Interheart study. In the Interheart study, avoidance of alcohol is actually told to be a risk factor for heart disease. Yes. This is so strange. You know, it's actually called a risk factor for heart disease. But subsequent data analysis has shown that as Indians, we might not have adequate amount of alcohol dehydrogenase in our blood, meaning we cannot metabolize alcohol to that extent as Western counterparts do. On top of that, हमारे behavioral pattern में हम क्या करते हैं? We don't have control. When we have 2, we want 3, we want 4, and we want 5, and binge drinking and all is okay. If you stick to very low dose, probably the scientific evidence says that it is protective to the heart. But what is doing to the liver, you don't know. So person who are having propensity of liver diseases, it will be doing harm. So alcohol, if you like, if you are in control, if you take in very low amount, then it might be good for your heart. But anything in excess, binge drinking and other things will actually harm you. Chandrani, did you listen? Did you hear me? Yes. Yeah. Hi, Chandrani. Yeah. Hi. Actually, I have a heredity of hypertension. All the family members of my family have hypertension. So at the age of 29, hypertension has been detected in me at the time of pregnancy. तो तब से ही मेडिसिन तो चल ही रहा है, मतलब ऐसे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही जैसे मैंने चैट में लिखा कि वंस या ट्वाइस कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हेड के पीछे से एक शूटिंग पेन होता है, और तब मैं जब बीपी चेक करती हूँ तो इट इंक्रीजेस टू 160, 65 or 100. Okay, that is a very interesting perspective. This happens in India very frequently. That is why hypertension is called silent killer. You know, hypertension per se के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन वो जो अंदर अंदर कुरत्ते आपका शरीर में डैमेज कर रहा है, ये आपको पता ही नहीं चलता है जब तक आपको बड़ा डैमेज ना हो जाए. एंड 29 years में अगर hypertension आपको डिटेक्ट हुआ, that is called hypertension in young. With pregnancy, it is called hypertension in pregnancy. Hypertension in pregnancy जिनको होता है, उनको future development of hypertension and hypertension related problems ज़्यादा होती है. Fine. So you need to be treated very well. As far as I can record, your hypertension has never been characterized quite well, because you had been very casually telling कि 160 हो जाता है, 190 हो जाता है. If you are staying in Delhi and still you have access to one of the best healthcares in the country, and still if you say that 160/90 BP रहता है, आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में there are at least 10 practitioners
whom you can go and discuss and see. If you ask me in this forum, yes, I will suggest you one thing. You need something called 24 hours ambulatory blood pressure monitoring, so that we understand the pattern of your blood pressure. Then we devise treatments accordingly. It is very important to have the BP under control. Why? I have told you this. Because blood pressure per se will not damage you. It causes latent eye damage, slowly kidney damage. And kidneys will show you the damage only when 50% of the kidneys is already damaged. You don't wait up to that. You take steps before. If it is 160/90, you should be visiting your practitioner and ask him properly कि कितना ambulatory blood pressure monitoring कराया जाए and accordingly treatment को optimize किया जाए. Thank you. Yeah. One more question I would like to ask you, because I am also participant in the program. So most of the times now I have seen Pritesh also want to ask doctor now, because हार्ट के ब्लॉकेज जो है ना कि हम लोग के जैसे लाइक वी वर्क इन कॉर्पोरेट, सो एवरी ईयरली वी डू एनुअल चेकअप, तो उसमें डिटेक्ट नहीं होता है, टूडी भी ओके निकलता है, इवन स्ट्रेस टेस्ट भी ओके निकल जाता है, उसके बाद भी ना इतने साल से हेल्थ टेस्ट कराने के बाद लोगों को अचानक से हार्ट अटैक आता है, जब पता चलता है वहाँ पे 80% ब्लॉकेज था. ये जो ब्लॉकेज 70 to 80% पहुंच जाता है, इंसान को पता भी नहीं चलता है, अटैक आने के बाद पता चलता है कि 80% ब्लॉकेज उनके हार्ट में, इट डजंट गेट डिटेक्टेड इन ऑल 2D एंड स्ट्रेस में. आई वांट समथिंग ऑन दिस. Yes. That is a very pertinent question. Actually, there is nothing called preventive check. Okay. अगर आपका suppose this is the artery, यहाँ 60% 70% प्लैक कुछ जमा हो रहा है, ठीक, प्लैक स्टेबल है, कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रही है. कल रात को कोई फैक्टर के लिए प्लैक अनस्टेबल हो गया, प्लैक रप्चर हो गया, इसमें क्लॉट बैठ गया, आपको हार्ट अटैक आएगा. लेकिन आप बोलोगे मैंने तो कल ही टेस्ट कराया था. The tests are no guarantee for this, but yes, the risk factors are guaranteed. So pre-test likelihood of disease जब ज्यादा होती है, वो टेस्ट judiciously employ करने से हमें मिलती है. और अगर आप बोलोगे कि अगर मिनिमल से मिनिमल हमें कैसा पता चलेगा, आंसर इज सिटी कोरोनरी एंजियो. सबको सिटी कोरोनरी एंजियो कराया जाए ये फिजिबल नहीं है, ना तो होनी चाहिए, बिकॉज वन सिटी will be like exposure to 150 x-rays and 100 ml of dye. Those dye, if you have kidney problems, will be harmful. So all these decisions have to be taken very cautiously, right? Pritesh. Good evening. Actually, I'm at the age of 28. So as of now, I don't have any problem, but to avoid any such problem in the future, what should I do? And what should I include in my daily? As I can see, you are a chubby looking young guy. So you are sedentary, right? Yes. Huh? Yes. At the age of 28, you should be playing football, cricket. This is Friday. This Friday, you should be with your friends. What you are doing with a heart disease program? No, I'm just joking. Yeah. See, you are chubby like me. I'm 50. You should look 28. Yes. That's my point. Yes. That is the fitness. What I suggest you is you should do regular exercises. Exercises मतलब ये नहीं है कि जिम में भर्ती हो जाओ कल से ही शुरू कर दो. The starting should be very gradual. और एक्सरसाइज का मतलब नहीं है कि आप डोले बना लो. एक्सरसाइज का मतलब है आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न ठीक करो, आपका मसल स्ट्रेंथ बढ़ाओ, आपका प्लास्टिसिटी बढ़ाओ, सोचने की क्षमता बढ़ाओ, एंड आप मन में खुशी प्रैक्टिस करो. Get my point? Yes. And Yes. adopt a healthy eating style. Healthy eating मतलब ये जो घी बटर से दूर रहना ये नहीं है.
ये एक्चुअली गुड है आपके लिए. आपके लिए जो हानिकारक है वो है कोल्ड ड्रिंक्स. आपके लिए जो हानिकारक है वो है चीनी, शुगर. You know, in Europe already it has started. They have started something called the sugar tax. आप जब भी कोई भी खरीदोगे, कोई भी सामान, यूरोप में जाओगे, सुपर स्टोर से कोई भी सामान खरीदोगे, सपोज 11 यूरो, 11 यूरो के बाद 0.2 शिलिंग लिखा रहेगा नीचे, एस टैक्स, दैट इज कॉल्ड शुगर टैक्स. ये इसलिए रखा है कि ताकि आपका दिमाग में घुस जाए कि जो आप एक्स्ट्रा टैक्स देके शुगर खरीद रहे हो वो आपको हानिकारक है. ये इस प्रकार हानिकारक है कि इन एवरी बिल दे आर राइटिंग, whereas in India we don't have this idea. Why? Because the food industry is dominant picture all around the world. सारे food industry thrives on added sugars and added, preservatives. You have natural fruits, at least 4 to 5 helpings of fruits per day. Dry fruits लो, काजू, अखरोट, बादाम, मूंगफली, ये सब लो. खुश रहो. Happiness is one of the biggest factor यार. अभी 28 साल में काय को सोचना है बीमारी के बारे में? No, sir, he is very preventive, I think. Pritesh in my building, 21-year-old boy, he got a heart attack and he got expired. Yes, yes. हाँ, तो आप लोग को प्रिवेंटिव अभी से ध्यान दोगे ना तो आगे you can prevent. नहीं, एक चीज है कि youngest angioplasty I did. Actually, the youngest I did was in 1-year-old kid. But 1-year-old kid. But that kid was having something called Kawasaki disease. Okay. Slightly बड़ा होने से the youngest person I did angioplasty was when I was in Medanta around 4 years back. This guy was 19 years and he was a call center employee. रात की ड्यूटी करके आए और टपरी में चाय पी रहे थे. He was smoking. He just collapsed. His friends picked him in the hospital. I was in the hospital. I took care, and somehow we could save him. The question is, at the age of 19, if you continuously smoke, if you stay awake at night, not have adequate food, then you are waiting for some catastrophe to happen. Yes, it will not happen to everybody, but it might happen to something. What the point I want to make is, the adoption of healthy eating should not start at the age of 50. Yes. It should start at your home. Yes. Before you reach adolescence. इसीलिए स्पेन में जो प्रोग्राम कर रहे हैं मदर एंड चाइल्ड लेके, उसी टाइप का प्रोग्राम, टारगेटेड प्रोग्राम इंडिया में होनी चाहिए. एंड आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर सूरज जी कि इस बारे में कुछ सोचा जाए कि हमारी जो माता बहनें हैं घर की धारक है, तो घर की चिंतन फिक्स करते हैं. जो बच्चों की इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा मदर की होती है. Yes, 100%. अगर मदर को ठीक से हमें आइडिया दिया जाए कि भाई कार्बोहाइड्रेट खराब है, बच्चों को खेलने दिया जाए, ये मदर लोगों को समझाना पड़ेगा कि बच्चों को 18 घंटा मत पढ़ाओ, उसको 3-4 घंटा खेलने दो, उसको चीनी मत दो, मीठा मत दो, उसको बढ़िया घी दो, घी शक्कर नहीं, घी दो, मक्खन दो. अगर वेजिटेरियन है तो गिव हिम मिल्क फैट, गिव हिम पनीर. अगर नॉन वेजिटेरियन है, अंडा, मछली, मीट, इनको जम के खिलाओ और इनको खेलने दो. नेचुरल फ्रूट दो. ओके ओके. होता है कि लेडीज लेडीज जी आपको देख नहीं पा रहे. हाँ हाँ, नमस्कार जी. नमस्कार नमस्कार. तो बोले जेंट्स लोग में ज्यादा होता है कि लेडीज लोग में, ऐसा कुछ है क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. मेरा क्वेश्चन था. हाँ, men are from Mars, women are from Venus. Okay. A woman, when she is menstruating after her puberty or menarche till menopause, she had the natural gift of estrogen in her body. Estrogen is protective for heart diseases. Okay.
partially protective. So among menstruating women, the incidence of heart disease is actually lesser. जब आपका मेनोपॉज हो जाती है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाती है, शरीर में धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बहुत बनने लगती है. 5 years after the menopause, the risk of heart disease in men and women is similar. But in menstruating women, the risk of heart disease is much lesser. So the pattern of disease is also different in women. अगर diabetes है uncontrolled in younger females, the effect is much more गंभीर. Why? Because compared to men, women का खास करके इंडिया में total body mass और lean muscle strength कम होती है. So for a given amount of diabetes, effect is amplified. जो नस का अंदर जो erosion, जो plaque का rupture होती है, in men the plaque rupture is more. In women, the proportion of plaque erosion is more. Women का जो एरिथमिया होती है, मतलब irregularities of heart rhythm, वो भी थोड़ा सा different वो है. Yes, what I'll do is I'll share an article on this I wrote in 3-4 years back in a magazine called Women. तो वो आर्टिकल मैं ढूंढ के निकालता हूँ, मैं ग्रुप में I will share it. गुड इवनिंग एवरीवन. Good evening. सर एक मेरा क्वेश्चन था कि नॉर्मल पर्सन में कितना ब्लॉकेज रहता है? नॉर्मल मतलब कि जो नॉर्मल इंसान में नॉर्मली कितना ब्लॉकेज रहता है आर्टरीज में? अच्छा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पूछ रहे हो कि एक आदमी जिसको कोई बीमार नहीं है, उनकी नसों में क्या बीमारी हो सकती है? Yes. Yeah, very nice question. See, there was a study called PDAY study. Okay, तो PDAY study में जितना भी डेथ हुआ है सब बच्चे लोगों को ये लोग ने बाहर जो ऑटोप्सी का सिस्टम है ये लोग ने देखा, and it was seen that जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक है शरीर में वो 12 साल का उम्र में चालू हो जाती है. ठीक है ना? सो 12 साल का उम्र से आपका शरीर में प्लैक हो सकती है, बट प्लैक नॉट ऑलवेज लीड्स टू ब्लॉकेजेस. तो नॉर्मल आदमी में एक्चुअली ब्लॉकेज होनी नहीं चाहिए, लेकिन जिसमें शुरुआत हो जाती है, मतलब चाइल्डहुड ऑनसेट डायबिटीज, चाइल्डहुड ऑनसेट हाइपरटेंशन, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है? तो वो सब सबसेट को हमें सिलेक्ट करके प्रॉपर लाइफस्टाइल एंड अदर गाइडेंस देनी. अभी मेरी एक्सरसाइज भी है और मैं रूटीन डाइट भी, जैसे मेरा गॉलब्लैडर नहीं है तो मैं राइट टाइम पे खाना भी खा रही हूँ. जो भी मतलब मुझे रेकमेंड करते हैं डॉक्टर, मैं सारी चीजें करती हूँ. लेकिन रीजन मुझे समझ नहीं आता है कि आजकल ऐसे क्यों हो रहा है. क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि मेरे फ्रेंड है, उनके बच्चों को भी 21-22 साल के बच्चों को भी ये हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है कि उनका बीपी हाई हो रहा है. तो मेन रीजन क्या है कि हम उन लोगों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? रीजन स्टार्ट कहाँ से होती है? हमारे खाने पीने की मैं समझा नहीं. या हमारी जो हेल्थ. सीमा जी, आपको ब्लड प्रेशर है ये पूछना चाह रहे हो या बच्चों को क्यों होता है ये है? और यस, मैं वही जानना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि मेरी अनहेल्दी जो मेरी बैड हैबिट्स थी वो मुझे नोटिस किया, लेकिन अब मैं उस चीज को जो सही रख रही हूँ, लेकिन रीजन है कि मैं जानना चाहती हूँ कि सीमा जी प्लीज लिसन. अगर 190 अगर है, इट इज ए वार्निंग साइन. उसमें लापरवाही ना कीजिए. मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, लापरवाही ना कीजिए. किसी डॉक्टर का परमिशन लीजिए या खुद नापिए, जैसा भी हो उसका इलाज कराइए. ये एक पार्ट है. The other part is आप कह रहे हैं कि बच्चों को कैसा प्रिवेंट करें. Yes, that is important. बच्चों को बिगिनिंग से आप एक्सेसिव सॉल्ट या एक्सेसिव प्रिजर्वेटिव वाला खाना ना दें. उनको नेचुरल फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स दिया जाए. फ्रूट्स बोले तो ये जरूरी नहीं है कि जो महंगा वाला फ्रूट्स है वो दिया जाए. फ्रूट्स बाय एंड लार्ज कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ पोटेशियम.
अगर आपका किडनी डिजीज नहीं है, पोटेशियम इज एक्चुअली गुड फॉर योर ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इनको सीजनल फ्रूट दिया जाए, इनको खेलने कूदने दिया जाए, और इनकी जो मन में आलस्यता है कि घर में बैठा रहूंगा, एसी में बैठा रहूंगा और खाली गेम खेलूंगा, मैं जाऊंगा नहीं आउटडोर एक्टिविटीज के लिए, ये वो करे। चाइल्ड शुड इंटरेक्ट विद चाइल्ड, चाइल्ड एडल्ट के साथ इंटरेक्शन नहीं, बच्चे ने अपना एज ग्रुप के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है। सोनिया जी देख रही है, ताक रही है, कुछ बोलेंगे। I will, she is waiting to tell. Yes, I had preferred, but I'm just telling. So my tips will be reduced preservative use, reduced salt use in the home, increase physical activity, increase the amount of happiness, increase interaction with peer groups, and love for physical activity should be there. Along with, they must be made aware that अगर आप घर ही में बैठे रहोगे, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करोगे, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड पुट इन करोगे शरीर में, तो you will get more prone to hypertension. डॉक्टर सोनिया ना, ये तो हो गई कार्डियोलॉजिस्ट के हिसाब से। एज ए साइकोलॉजिस्ट, व्हाट यू वुड लाइक टू एडवाइज ऑल द पीपल? हाँ, see, since I am more into mental and emotional health, Yeah. so I have found in my so many years of practice that most of the cases, whether it be children or adult, most of them actually are very related, very psychosomatic because of the current situation in the world. I mean, not only COVID, but even pre that, with a lot of competitions around. Yes. Everyone wants to do excellent. Even a small child, like an 8-year-old, 6-year, in fact, nowadays because of this toddler schools and all, you can imagine how much pressure a child is put right from he's born. Yeah. So, they don't live their life. It's like they have always been they don't live their childhood. And then with these gadgets around and all, I somehow feel that everything is very psychosomatic. And everyone knows these rays of these mobile phones and laptops are actually not good. Yeah. They are very harmful. And then we are eating also food, cooked in microwave oven and all. The rays are again harmful. Yes. In fact, they say that even if you want to keep your heart safe, don't keep the mobile phone in your heart, in your pocket, because it affects your heart. Because heart is an electromagnetic organ. And even these gadgets are all magnetic, so it creates pressure on the heart. So the circumstances around, I feel like that lady, she was talking about the child who was suffering from high BP and all. So sometimes it doesn't come anything. I mean, the report doesn't show anything, but then you have to see exactly what's happening with the child. And I also feel food is a very important factor. If you all know that it is, Hippocrates also said that make food like, your medicine. Eat food, die, food, die, heal. Okay. Food is a medicine. Eat food like a medicine. Don't, hog on to food. And the body gives you signals. The body, you have to listen to your body. I believe that a lot. So you have to listen what your body is saying, and you have to eat food when your body feels hungry. We tend to overeat a lot. And some people are so fixed. Oh, I should eat lunch by 1. I should eat lunch by 2. I should eat breakfast by 9. It's not that. You should only eat food when you are hungry. Your body gives you signals like you are hungry. And eat only 3/4 of your, fill up only 3/4. Leave the 1/4. And the drinking water, people keep on drinking water thinking that you will get dehydrated, but the body also gives you signal when it needs water, and you come to know that you're dehydrated. So for me, these things are very important when it comes to, I mean, why only heart health? Any health. It's like overall health. Yes. हार्ट अटैक का सिम्टम क्या है? मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे घर पे डॉक्टर हो और वो उनको पता चले कि हार्ट अटैक हुआ है. मैंने वो कहते हैं ना, उस्तादों की मार लास्ट में होती है. इन्होंने ट्रम्प कार्ड लास्ट में फेंका. लास्ट एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाँ, so see, देखिए, out of all heart attacks,
50% don't reach hospital. Yes. They die. India का data है. Yes. Out of all heart attacks, around 1/3 is silent. Yes. Out of all heart attack, only 40% present with chest pain. Out of all heart attack, 80% are sudden. Yes. So many a times you will not know when heart attack will come. But yes, by and large, sudden सीने में दर्द होना, पसीना होना, and जो दर्द है, it is called that classically it is described the feeling of impending doom. मतलब बहुत कुछ खराब होने जा रहे हैं. एक होता है खाली दर्द और दर्द के साथ feeling of impending doom. चक्कर आना, चक्कर आके गिर पड़ना, sudden profuse sweating, jaw pain, pain going to the left side of the heart, left side of the hand, pain increased on exertion, sudden unexplained pain, all should point to probable heart attack. However, pain might not be present in some diabetics because diabetes में छोटी छोटी जो नस होती है ना वो affected होती है. So pain perception might be affected. So in those patients, breathlessness might be there. We call it anginal equivalent. मतलब it is equivalent to an anginal symptom. वो क्या है? Sudden profuse sweating, sudden breathlessness, undue breathlessness. MI का myriad presentation है. I have seen heart attack patients presenting only with psychiatric complaint. These are called neuropsychiatric manifestation of MI. वो भी हो सकती है because दिमाग में कम खून जाने से आपकी कुछ psychiatric manifestation आ सकती है. I have seen heart attacks presenting only with diarrhea because हार्ट की जो निचला भाग है, मतलब ये देखिए हार्ट, इसकी जो निचला भाग है that is in contact with diaphragm. डायफ्रामेटिक निचली भाग में अगर हार्ट अटैक होगी तो diaphragmic irritation के लिए you can have loose motions, you can have vomitings only presenting as this thing, vomitings only present. So unnatural, anything can happen if you suspect heart attack. अब देखिए कुछ चीज में दिमाग लगाना पड़ेगा. 19 साल का बच्चा है, वोमिटिंग हो रहा है, पहली बार हार्ट अटैक मत सोचिए. डायबिटिक पेशेंट है, किडनी डिजीज का पेशेंट है, अनएक्सप्लेन वोमिटिंग हो रहा है, पेशेंट को खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है, उस पेशेंट को हार्ट अटैक सोच के अर्जेंटली हॉस्पिटल में नहीं जाइए. बात समझ में आई? कॉन्टेक्स्ट का ऊपर. हाँ, ऑल सिम्टम्स आर नॉट नेसेसरीली टू बी प्रेजेंट. इट कैन प्रेजेंट, दिमागी सिम्टम्स से भी प्रेजेंट कर सकता है, लूज मोशन से प्रेजेंट कर सकता है, वॉमिटिंग करके प्रेजेंट कर सकता है, ब्रेथलेसनेस करके प्रेजेंट कर सकता है. चेस्ट पेन इज द मोस्ट ड्रामेटिक थिंग एंड इसको कहते हैं लिवाइन साइन. मतलब क्लासिकली ये फिस्ट पकड़ के ऐसा करता है बंदा, और बंदा कहता है कि ये पेन जो है ना, ये पेन मेरे को लाइफ में नहीं हुई, ये कुछ अजीब ही है, मैं मर ही जाऊंगा, ये अजीब है, ये फीलिंग अजीब है. ये शायद नेचर ने दिया हुआ है. नेचर आपको एहसास दिलाता है कि भाई हार्ट तो एक ही है, तुम इसको जल्दी बचाओ, समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन, यू नो. सो these are many things. So levine sign, chest pain, breathlessness, sudden dizziness, unnatural psychiatric behavior, unnatural vomiting, unnatural diarrhea, unnatural profuse sweating.